Very great afternoon, dear students. Today we are going to discuss very important topic, dielectric. So let's start. Dielectric are those which do not conduct electricity. These are just like an insulators. But whenever dielectric are placed inside the electric field, induced charges are produced in them. Clear? Dielectrics are those which cannot conduct electricity. However, when an external field is applied, induced charges appear on the surface of the dielectric. So, what are dielectrics? Dielectrics are those which do not conduct electricity, but whenever these dielectrics are placed inside the electric field, yeah, you can say whenever external electric field is applied, induced charges appears on the surface of the dielectric under the influence of the external electric field. So, dielectric are those which cannot conduct electricity. However, when an external field is applied, induced charges are appear on the surface of dielectric as shown in the figure. This is a parallel plate कैपेसिटर. इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में बेटा हमने क्या रखा है, ये डायरेक्ट्रिक स्लैब रखी है. और जब डायरेक्ट्रिक स्लैब रखी है, अगर आप इसके राइट साइड को देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे कैसा चार्ज इंड्यूस हो गया है, प्लस QI. यहाँ कैसा चार्ज इंड्यूस हुआ है, माइनस QI. तो हमने इसकी डेफिनेशन में भी कहा कि डायरेक्ट्रिक वो होते हैं जो कंडक्ट नहीं करते हैं, लेकिन जब इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो इसके सरफेसेस के ऊपर चार्जेस जो है वो इंड्यूस हो जाते हैं. ठीक है कि नहीं? और ऐसा क्यों होता है? देखो, डायरेक्ट्रिक्स आपके पास दो टाइप्स के होते हैं. एक होते हैं नॉन पोलर डायरेक्ट्रिक, एक होते हैं पोलर डायरेक्ट्रिक्स. नॉन पोलर डायरेक्ट्रिक्स कौन से होते हैं? नॉन पोलर डायरेक्ट्रिक्स आर दोज इन द एटम और मॉलिक्यूल ऑफ विच सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड. These are the non-polar dielectrics. Non-polar dielectrics are those in the atom or molecule of which center of gravity of positive and negative charge coincide. They are the non-polar dielectrics. And polar dielectrics कौन से होते हैं? Polar dielectrics are those in the atom or molecule of which center of gravity of positive and negative charge do not coincide. अब यहाँ पे आप देखें, there is no separation between the positive and negative charges. And due to zero separation between the positive and negative charge, their dipole moment is zero. But whenever we discuss the case of polar dielectric, there is a finite separation between the positive and negative charges, and due to finite separation between the positive and negative charges, they possess the dipole moment. अब देखो होता क्या है बेटे इसमें, जैसे सपोज करो ये आपके पास क्या है, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है. जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड आप अप्लाई करेंगे, एक्सटर्नल फील्ड हमने अप्लाई कर दी, तो ये क्या हो गया, ये स्ट्रेच हो जाता है ऐसे, पॉजिटिव चार्ज ये शिफ्ट हो गया आपका, नेगेटिव चार्ज किया गया, एंड दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में, इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी आप अप्लाई करते हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस के आपके क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं. तो जो भी ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल था, ये कैसा बन गया, पोलर बन गया. ये जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल था, ये कैसा बन गया, पोलर बन गया. किसके इन्फ्लुएंस में? इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में. सो फिनोमेनन ऑफ स्ट्रेचिंग ऑफ डायलेक्ट्रिक ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्जेस अंडर द इफेक्ट ऑफ द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज द पोलराइजेशन. सो डायलेक्ट्रिक कौन से होते हैं बेटा? डायलेक्ट्रिक वो होते हैं, डायलेक्ट्रिक्स आर दोज व्हिच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, but whenever external electric field is applied, charges are induced on them. Dielectrics are those which cannot conduct electricity. However, when an external field is applied, induced charges are appear on the surface of dielectric. अभी हमने यहाँ से देखा, क्योंकि जब भी ये डायरेक्ट्रिक स्लैब को आपने इसके बीच में रखा, इसकी क्या होगी, पोलराइजेशन होगी. ये कंसेप्ट अभी हम डिटेल में स्टडी करेंगे. ठीक है? और इस सरफेस के ऊपर कैसा चार्ज आ गया, प्लस QI, यहाँ कैसा आ गया, माइनस QI. ठीक है? तो अब ये आपके पास कौन सा डायलेक्ट्रिक था, कौन सा मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर. नॉन पोलर मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड, और नॉन और पोलर में सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज डू नॉट कोइंसाइड. क्लियर? Due to zero separation in case of non-polar molecule,
due to zero separation between the positive and negative charges, their dipole moment is zero. But whenever we discuss the case of polar, due to finite separation between the positive and negative charges, they possess the dipole moment. They have the symmetrical distribution of charge, they have the asymmetrical distribution of charge. So students, let's discuss in detail what are the polar and non-polar dielectrics and concept of polarization. Clear? चलें. So students, now we discuss polar and non-polar dielectrics. What are non-polar dielectrics? Non-polar dielectrics are those dielectrics in the atom or molecule of which center of gravity of positive and negative charge coincide. As we see from figure, non-polar dielectrics are those dielectrics in the atom or molecule of which center of gravity of positive and negative charge coincide, and they have the symmetrical distribution of charges, and due to the zero separation between the positive and negative charges, they possess the zero dipole moment. Due to the zero separation between the positive and negative charges, they possess the zero dipole moment. So what are non-polar dielectric? A dielectric in the atoms or molecule of which the center of gravity of positive and negative charge coincide is called a non-polar dielectric. We see from here, center of gravity of positive and negative charge coincide. Thus, in the atom or molecule of a non-polar dielectric, the positive and negative charge has a symmetrical charge distribution about their centers as shown in the figure. Due to the zero separation between positive and negative charges, the electric dipole moment of such atom or molecule is zero. Example क्या क्या है इसके? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, बेंजीन, मीथेन, etc. are made up of the non-polar molecules. So what are the non-polar dielectrics? Non-polar dielectrics are those dielectrics in the atom or molecule of which center of gravity of positive and negative charge coincide. You can see from the figure. And due to the zero separation between the positive and negative charges, their dipole moment is zero, and these are the examples. Clear? Now come to the polar dielectrics. Polar dielectrics are those dielectrics in the atom or molecule of which center of gravity of positive and negative charge do not coincide, and they have the asymmetrical distribution of charge about their centers, and due to the finite separation between the positive and negative charges, they possess the dipole moment. Clear? A dielectric in the atoms or molecule of which the center of gravity of positive and negative charge do not coincide is called a polar dielectric. Therefore, in the atom or molecule of a polar dielectric, the positive and negative charge possess an asymmetrical charge distribution about their centers as shown in the figure, and due to finite separation between positive and negative charges, they possess a finite electric dipole moment. And what are the examples? Water, alcohol, MS3, HCl, etc. are made up of the polar molecules. Clear? So let's recall once again. What are non-polar dielectrics? Non-polar dielectrics are those dielectrics in the atom or molecule of which center of gravity of positive and negative charge coincide. And what are polar dielectrics? Polar dielectrics are those in which the atom or molecule have positive and negative charge have a finite separation. You can say non-polar dielectrics are those in the atom or molecule of which center of gravity of positive and negative charge do not coincide, and due to the finite separation between the positive and negative charges, they possess the finite dipole moment. But in this case, due to the zero separation between the positive and negative charges, their dipole moment is zero. Clear? After that, we have to discuss polarization. After that, we have to discuss the polarizations. Polarization क्या होता है बेटा?
जैसे सपोज करो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, दिस इज द नॉन पोलर मॉलिक्यूल, and whenever the electric field is applied, whenever the electric field is applied, it goes stressed under the influence of the electric field. When this is the non-polar molecule, and whenever the electric field is applied and under the influence of this electric field, this dielectric got stressed, mean it convert from non-polar to polar, and the phenomenon of stretching of dielectric due to displacement of charges under the action of external electric field is known as the polarization. What is polarization? The phenomenon of stretching of dielectric, कैसे stretch हुआ ये? Due to displacement of charges. किसके influence में? Under the influence of the external electric field is known as the polarization. Clear है बेटा? So हमने यहाँ क्या क्या स्टडी कर लिया? पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। एक बार ये पोलराइजेशन जो है, एक बार फिर से मैं आपको और अच्छे से बता देता हूँ। So let's see what is polarization. So what is polarization? Polarization बेटा भी मैंने आपको बताया, the phenomenon of stretching of dielectric due to displacement of charges under the effect of external electric field is known as the polarization. This is non-polar atom, here you can say non-polar molecule. Whenever electric field is applied, positive and negative charge got displaced, and this non-polar molecule get converted into polar. So phenomenon of stretching of dielectric due to displacement of charges under the effect of the external electric field is known as the polarization. So let me see. When a non-polar atom is subjected to an electric field, the positive nucleus gets pulled along the direction of electric field, while the electrons pulled in the opposite direction as shown in the figure. देखो बेटा, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से अप्लाई की तो पॉजिटिव न्यूक्लियस किसकी डायरेक्शन चला गया? इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रॉन जो है इसके अपोजिट में गए। दिस इज इलेक्ट्रॉन क्लाउड, यू कैन सी फ्रॉम हियर। ड्यू टू दिस restoring force is set up so as to bring the electron cloud back to its original state with respect to the nucleus. जब न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन से शिफ्ट हो गए तो वहां पे एक रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट कर रही है। उसका क्या काम है? वो क्या काम करेगी कि इलेक्ट्रॉन्स को दोबारा उसी स्टेट में लेके आएगी जिसमें वो पहले प्रेजेंट है विद रिस्पेक्ट टू द न्यूक्लियस। और ये प्रोसेस कब तक चलती रहेगी? स्ट्रेचिंग की प्रोसेस कब तक चलती रहेगी? द स्ट्रेचिंग ऑफ एटम कंटिन्यूज टिल द रीस्टोरिंग फोर्स बिकम जस्ट इक्वल एंड अपोजिट टू force exerted by the applied electric field on the charges. और ये प्रोसेस जो स्ट्रेचिंग ऑफ एटम्स है वो कब तक चलता रहेगा बेटा? दिस स्ट्रेचिंग ऑफ एटम कंटिन्यूस टिल, कब तक? टिल द रीस्टोरिंग फोर्स बिकम्स जस्ट इक्वल एंड अपोजिट टू द फोर्स exerted by the applied electric field on the charges. So stretching of dielectric atoms due to displacement of charges under the effect of the external electric field is called the polarization. And whenever there is a polarization, the positive, and you see from here, and under the process of the polarization, this positive and negative charges got separated, and there is the finite separation between the positive and negative charges, and then there is the finite dipolar moment. You can see from here. As a result of stretching of atom, center of gravity of positive nucleus does not coincide with that of the negative electron. Due to this, the atom acquires a dipole moment. So students, इस लेक्चर में बेटा हमने क्या क्या स्टडी किया? हमने स्टडी किया व्हाट आर डाइलेक्ट्रिक्स, डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में स्टडी किया। We have discussed about the non-polar dielectrics. We have discussed the example of non-polar dielectrics. We have discussed polar dielectrics, example of polar dielectrics, and finally we discuss the polarizations. So students, I hope ये क्वेश्चन बेटा आपको समझ आ गए होंगे। अब लास्ट में मैं आपसे 3-4 क्वेश्चन पूछूंगा और बच्चा मेरे को कमेंट बॉक्स में इसके आंसर दे देगा, जिस बच्चे ने लेक्चर देखा होगा। स्टूडेंट्स,
what do you understand by polarizations? Polarization क्या होती है? And what is the effect of polarization on the non-polar dielectric? You have to give the example of the 5 example of polar dielectrics, 5 example of non-polar dielectrics, clear? And 2 or 3 example of dielectrics. So students, I hope you got fully understand with the concept of dielectric, polar dielectric, non-polar dielectrics and polarization. So students, thank you. Have a nice day.